Question number 2, histograms. The times taken by 200 players to solve a computer puzzle are summarized in the table. Draw the histogram to represent this information. So unlike the previous question that had gaps in it originally in the data values, इधर ऐसा मसला नहीं है. It's 0 to 10, then 10 to 20, then 20 to 40, and so on. So that means the bars are connected. So वो मसला नहीं है. Now we just need the frequency density, and frequency density is frequency over class width. So let's write the frequency densities here. So it's going to be frequency, which is 16 over class width, which is 10. So it's going to be 1.6. Then it's 54 upon 10, which is 5.4. Then it's 78 upon 20, जो क्या होता है 3.6, no, 3.9. So this is 3.9. Then frequency 32 over class width 20. So 32 by 20 is 1.6. And then frequency is 20, class width is 40, so that's 0.5. I hope you remember how to find the class width. So class width is the difference between this upper and lower T limit. So first class width 10 है, फिर दोबारा 10 और 20 के बीच में 10 units हैं, then 20 to 40 has 20 units. So the third class width is 20 and so on. So now we plot these on the y-axis, and on the x-axis it's 0 to 10, 10 to 20 and so on. Okay. अच्छा. So कर लेते हैं फिर इसको plot. Just like histograms, you have to make sure that you label the x and y axis properly. Otherwise, you lose 1 mark for not labeling. यहाँ पे time है. I believe in minutes. Time था. Time taken, yes. So time in seconds. So time in seconds. And the y-axis has the frequency density. So frequency density here. Okay, so the first bar is between 0 to 10 or 100 तक जाना है. So 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 यहाँ तक आ गया. So this is 10. Next 10 to 20, then 40, then 60. Then 40, then 60, and then 100. Now let's take a look at the heights and decide on a scale on the y-axis. So it goes till 5.4. Okay, so 5.4. Okay, so we can say that 2 boxes is 1. 1, 2, 3, 4, 5. First height है 1.6 तक, 0 से 10. Okay, so that's going to be here. This is 1. This is going to be 1.6. So here. Then it's from 10 to 20, the height is 5.4. So 5 is here, 4 is here, and 10 to 20. Then it's 20 to 40, and the height is 3.9. So 3.9 is going to be here. And then 40 to 60, height is 1.6. So right here. And then 60 to 100, the height is 0.5. So right. This is going to be the histogram. अभी तक हमने O levels वाला ही histogram किया in question number 2. Okay, part B says, calculate an estimate of the mean time taken by these 200 players. So again, same mean we used to find in O levels. How did we find mean?
take mid value into frequency plus next mid value into frequency and so on till the very end, and then you divide the value with 200 players. So divide the result with 200. So what's the mid value here? 5. Then it's going to be 15. Then it's going to be 30. Then the mid value is 50. And then the mid value is what? 80. Yes. So 5 times 16 plus 15 times 54 plus 30 times 78 plus 50 times 32 plus 80 times 20. ये हो गया, and whatever is the result is going to be the mean, which is going to be 32.15. So the mean time is 32.15 seconds. Next is find the greatest possible value of the interquartile range of these times. Okay. So greatest possible value of the interquartile range. What does that mean? इंटरक्वार्टाइल रेंज आता कैसे है? अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। और अपर क्वार्टाइल क्या होती है? लेट्स से ये डेटा यहाँ मिड वैल्यू है, यहाँ 50%, या अगर ये टोटल 100 वैल्यूज हैं फ्रॉम 0 to 100, तो ये 50th जो वैल्यू होगी वो मिडिल में होगी, सो वो मीडियन होगा। फिर यहाँ जो फर्स्ट क्वार्टर में वैल्यू होगी वो लोअर क्वार्टाइल होगी, और यहाँ पे जो थर्ड क्वार्टर में वैल्यू होगी वो अपर क्वार्टाइल होगी। एक्चुअली 1 to 0 to 100, चलो ठीक है। एनीवे, सो अब हमने अपनी गिवन डेटा वैल्यूज का मीडियन फाइंड करना है, सॉरी लोअर क्वार्टाइल फाइंड करना है। सो डेटा वैल्यूज हमारे पास कहाँ से कहाँ तक हैं? 0 से लेकर 100, बल्कि नहीं, हाउ मेनी प्लेयर्स डू वी हैव? वी हैव 200 प्लेयर्स। सो 200 के मिडिल में कौन सी वैल्यू? अगर हम सारे प्लेयर्स को असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा करें डिपेंडिंग ऑन द टाइम दे टुक, तो मिडिल में कौन से प्लेयर्स होंगे? मिडिल में होगा 100th प्लेयर एंड 101st प्लेयर। ठीक है, जब इवन वैल्यूज होती हैं तो मिडिल में 2 वैल्यूज होती हैं। सो मीडियन किधर होगा? मीडियन वहां होगा, उस ग्रुप में होगा जिसमें 100 और 101 वैल्यूज हैं। सो 16 प्लस 54 बनता है 70, 70 प्लस 78 बनता है 148। इस रीजन में मीडियन लाई करे। सो मीडियन is a value between 20 to 40. However, इस क्वेश्चन में मीडियन की बात नहीं, इस क्वेश्चन में हो रही है इंटर क्वार्टाइल रेंज की बात। सो लोअर क्वार्टाइल किधर आएगा? लेट्स फाइंड अ क्वार्टर ऑफ 200, एस्टिमेट करें। सो क्वार्टर ऑफ 200 इज 50। 50th प्लेयर इस रीजन में आएगा। सो 50th प्लेयर जो है उसमें उसकी टाइम है बिटवीन 10 to 20। सो जो अपर क्वार्टाइल, सॉरी जो लोअर क्वार्टाइल है, दैट वुड बी एनी वैल्यू बिटवीन 10 to 20। और अपर क्वार्टाइल में हम अपर क्वार्टर देख लेते हैं। 200 में से हम वे फाइंडिंग 3/4 ऑफ और 75% ऑफ 200, सो दैट्स 150 estimated. So 150th player किधर होगा? 16 plus 54 plus 78 is 148. So यहाँ पे होगा the 150th player. So this is going to be the upper quartile. So upper quartile is some value between 40 to 60. पूरी range आ रही है हमारे पास, एक fixed upper quartile नहीं है, एक fixed lower quartile नहीं है, क्योंकि ग्रुप डेटा। ओके, तो अब इनका क्या डिफरेंस लें ताकि हमारे पास मैक्सिमम डिफरेंस आए? दैट वाज द क्वेश्चन। फाइंड द बिगेस्ट इंटरक्वार्टाइल रेंज, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटरक्वार्टाइल रेंज। ओके, सो
ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम अपर क्वार्टाइल में बड़ी वैल्यू ले लेते हैं 60 और लोअर क्वार्टाइल की छोटी वैल्यू ले लेते हैं 10। सो जब हम 60 और 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट द बिगेस्ट आंसर 50। So the highest possible value of the interquartile range will be 60 minus 10, which is 50. Okay, that is the answer. कोई questions हैं तो please पूछो. Let's take a look at the next question. Okay, so what is this? The following histogram represents the lengths of worm in a garden. Calculate the frequencies represented by each of the four histogram columns. Okay, so histogram में तो y-axis पे frequency density है. आपसे frequency पूछिए. So what is the formula for frequency? We know that frequency density is frequency over class width. So then frequency would be frequency density into class width. So frequency density ये height है और class width ये है. So basically frequency actually ये area of the bar होती है. Length into width, which is area of the rectangle. So the first frequency is going to be, यहाँ पे क्या value is it exactly in between 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, ये 2 है. So 2 into 5, 10 हो गई. First frequency is 10. मैं इसी के अंदर लिखती हूँ. Second frequency हो गई 8 times 5. ये 8 है और ये 5 है. Frequency density into class width. So that's 40. Next है 12 into 10 है. So 120. और लास्ट बार की फ्रीक्वेंसी है 6 हो गया ये और टाइम्स 5 which is 30. Let me confirm. 10, 40, 120, 30. ठीक है. On the grid, on the histogram, on the grid, on the next page, draw a cumulative frequency graph to represent this. अच्छा जी. अब cumulative frequency हम तब बनाएंगे जब हमारे पास cumulative frequency का टेबल हो. हमारे पास cumulative frequency का टेबल नहीं है, हमें histogram पता है. तो पहले histogram से हम frequency टेबल बना लेते हैं और उस frequency टेबल से cumulative frequency टेबल बना लेते हैं. So, अब इसका फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनेगा? जो लेंथ है इन सेंटीमीटर वो यहाँ आ गया और यहाँ आ गया नंबर ऑफ वर्म्स या फ्रीक्वेंसी. ओके, सो लेंथ इज बिटवीन 0 to 5, then 5 to 10, then 10 to 20, then 20 to 25. और फ्रीक्वेंसीज हमने अभी निकाली हैं 10, 40, 120 और 30. अब इससे बनाना है फ्रीक्वेंसी टेबल, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल. सो सेम लेंथ इधर आ गया और यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट लेस देन इक्वल्स टू 0, then less than equals to 5, less than equals to 10, less than equals to 20, less than equals to 25. So less than 0 तो 0 ही है, less than 5 10 है, less than 20 10 plus 5 50, लेस देन 20 में ये तीनों आ गए तो ये आ गया 170.
और फिर 170 plus 30, 200. This is the cumulative frequency table. Now, I'm not going to draw the cumulative frequency. We discussed this plenty of times in the previous worksheet. Okay, 0, 0 is going to be a point, 5, 10, 10, 50, 20, 170 और 25, 200. इन सबको प्लॉट करेंगे और फिर एक स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर लेंगे तो we'll get the cumulative frequency graph. Calculate an estimate for the mean length. अब mean के लिए वही O levels वाला काम, midpoint into frequency and so on. तो इसके लिए हमें यही टेबल यूज करना है. So 0 to 5 का midpoint हो गया 2.5. So 2.5 into 10 plus 7.5 into 40 plus 15 into 120 plus 22.5 into 30. Divided by 200. So इससे आ जाएगा mean. Fourteen is the mean. Okay. Next question. वैसे क्वेश्चंस ऐसे करने चाहिए कि तुम लोग होमवर्क में करो और मेरे से खाली प्रॉब्लम्स डिस्कस करो. क्या फजूल क्वेश्चन है तुम लोग को कराने बैठी हैं. खैर, दिस इज द लास्ट डे वी स्पेंड ऑन द फर्स्ट चैप्टर. कल से इंशाल्लाह हम अगली बात करेंगे which I believe is standard deviation. खैर पता नहीं, I'll just check and let you guys know. But this is the last day we spend on data representation, which is the first chapter. Okay. Question 4. A survey was made of the journey times of 63 people who cycle to work in a certain town. The results are summarized in the following cumulative frequency table. Show how many journey times were between 25 to 45 minutes. So ये कैसे आएगा? How many journey times were between 25 to 45 minutes? 32. 32, हाँ. Less than 45, 50 journeys हैं, less than 25, 18 journeys हैं, तो फिर इनको subtract ही करना है. 32. Draw the histogram. Histogram हम cumulative frequency table से तो बना नहीं सकते. पहले इसको change करेंगे frequency table में और फिर इससे बनाएंगे. तो इसका टेबल बना लेते हैं, बाकी हम हिस्टोग्राम नहीं बनाएंगे. ओके, तो अब इसका टेबल कैसे बनेगा? पहले हम कर लेते हैं 0 to 10. ये क्या थी? लेंथ थी इनसे, टाइम है. तो 0 to 10 minutes, फिर 10 to 25 minutes, फिर 25 to 45, फिर 45 to 60 और फिर 60 to 80. लेस देन 10 किसी ने नहीं लिए. लेस देन 25 18 होगा. लेस देन 45 50 है, बट उसमें से हमें 18 माइनस करना पड़ेगा, which is 32. फिर लेस देन 60 50, सॉरी क्या गड़बड़ की है. 0 to 10 0 है, 10 to 25 18 है, 25 to 45 हो गए 32. फिर 45 to 60 हो गई 9 by 59 minus 50 और फिर 80 to 60 हो गई 4.
जैसे 63 आ रहा है और यहाँ पे 63 people here, so that's correct. Okay. Now we have the frequency table. Gaps कोई भी नहीं है, so that's not a worry. और फिर हम वही frequency over class width करके frequency density निकालेंगे और फिर y axis पे frequency density plot करेंगे और x axis पे ये 0 to 10 और 10 to 25 वाले gaps plot करेंगे. Let's see इसमें और कुछ पूछा है. Calculate the estimate of mean भी अब बहुत दफा कर चुके हैं. Midpoint into frequency and so on divided by total value which is 63. ओके, अब देखते हैं इधर और कुछ है जो हमने नहीं किया. ओके, ये क्वेश्चन है 6. Robert has a part-time job delivering newspaper. On a number of days, he noted that time correct to the nearest minute that it took him to do his job. Robert used his result to draw up the following table. Two of the values in the table are denoted by A and B. Find the values of A and B. ये A frequency density है, तो ये कैसे आएगी frequency density? बताएं. There's a frequency. 9 divided by 1. 9 divided by 1 गलत है. It's not 1. Class width is not 1. What will be the class width? 2. हाँ, क्यों है 2? दो नंबर है 63 और 64. नहीं, लेकिन हम ऐसे तो नहीं करते थे. क्लास विड्थ हमने हमेशा सबट्रैक्ट करके ही निकाली है ना. 64 माइनस 63 1 होती थी. तो अब हम रूल क्यों चेंज कर रहे हैं? हम इसको 2 क्यों कह रहे हैं? Anybody who can point that out? Why is this class width 2, not 1? Because the answer is 9 upon 2, not 9 upon 1. क्योंकि टाइम्स देखो, टाइम के जो ब्लॉक्स बने हुए हैं उनमें गैप है. पहले गैप को फिल करना है. तो ये इसको ये बन गया 62.5 और ये बन गया 64.5. So the class width is actually 2. So it's going to be A equals 9 upon 2, which is 4.5. B कैसे आएगा? B में frequency density is 1.5 equals to frequency, which is B upon class width. Same, adjust that 71.5 and 67.5. तो ये क्या हो गया 4. So B is going to be 6. What else do we need to find? That's it. चलो, ओके. इधर लेसन एंड करते हैं और इंशाल्लाह कल हम नया चैप्टर शुरू करें, स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है. टेक केयर. सी यू गाइस टुमारो. अल्लाह हाफिज.